Okay, let me go live. Hello, and once again, welcome to the second session of day 12, 15-day physical science program for class 10. And in the first lecture, we had discussed about the magnetic effect of electric current, that an electric current produces a magnet, and that is an electromagnet. And we saw how we can find out the magnetic lines in which direction the field works for a straight carrying conductor, for a circular carrying conductor, both inside and outside. Nearer to the turn, the coil. And inside the coil, we knew how to find the direction of the magnetic field as well as the construction of the magnetic field lines. And also we found difference between a simple coil and a solenoid. And we also know that how to find out the North Pole, South Pole in case of a solenoid. I would like to ask a couple of questions to you. Pritham has now joined. I'm sure he must be watching all the videos when he's not able to join the live Zoom sessions for his busy schedules. Now tell me, Jodi, current put a straight carrying conductor re upuru toluku jauchi. Let me show in upuru toluku jauchi into the paper is shown by a cross mark. Lekhi diyo eta into the plane. Of the paper or gote paper upare futikiri achi, gote wire ta futikiri achi. Plus sign mane it is going into the plane of the paper. Dot sign mane it is coming out of the plane of the paper. Current into and current out of the paper. ସେଥିପାଇଁ dot को करा जाए out and cross in. Cross sign stands for the current is going into the plane of the board, plane of the paper, and dot sign is coming out of the paper. More question thila, jodi ei bhaliya paristhiti re gote conductor achi, straight carrying conductor, then how you will show the direction of the magnetic field it will create. Theta question, what will be the nature of the magnetic field lines? What will be the geometrical nature of the magnetic field lines? And how will you know the direction of the field at any point? Of course, you will draw a tangent. If it is a curved line, you draw a tangent at that point and in that direction. But what is the main direction? How will you know? Raise your hands. No worries. Yes, let me share my screen so that it will be easier for you to. I have not. So I was showing this. तमको देखो नथिली शेयर करी नथिली. I'm sorry. एटा a cross sign ta ba plus sign ta ba cross sign ta, that will indicate the current is going into the plane of the paper. गोटे wire ta futikiri अछि, गोटे paper re futikiri अछि. So गोटे plus sign ba cross sign, you can make a cross sign also.
A type of. That will indicate the current is going into the plane. And dot sign will indicate the current is going out of the plane. Empty jauchi. Eta empty jauchi cross, empty jauchi. Setme dot out cross in. E चिन्ह द्वारा straight carrying conductor ro direction of the current को प्रकाश करा जाए. My question was this: जदि it is going into the paper like this, then what is the geometrical nature of the field line and how will you find the direction? Yes, Om Prakash. Sir, clockwise direction. केम जानिबो को रूल यूज करके जानिबो? Right hand rule. Maxwell's. Maxwell right hand rule बा corkscrew rule को यूज करके जदि thumb टाकू तळु को, because the current is going below, down the table or down the paper, so thumb टाकू तळु को देखा गला and other fingers को curl करा गला, so एमिति जाउची हाथ एमिति, so clockwise direction रे जाउची, so that is the direction. And what is the geometrical figure that it will create? Sadha? Circular. Circular, ठीक कहिसंती श्रद्धा सुमन, ठीक कहिसंती, it will produce a circular field line. The nature of the field line will be circular. And my next question, if it will be a circular loop, turn carrying conductor. It's not a straight carrying conductor. It is circular current carrying conductor. So what will, how will you know the direction of the field in the inner region? And how will you know the direction of the field or the field lines figure, diagram in the vicinity of the conductor? In any vicinity, jo pakho, ekdam pakho ko, in the vicinity of small little element of that long coil, by long turn, you take go to the end of that particular that particular conductor. Sei pakha pakhi, how you know? Well, ei tinta hato anubhav hato tekuno, pragyaspita hato tekuno, etre rudra ko. Sir, coil मझिरे समांतराल भाବରେ ଯିବ ଆଉ coil ବାହାରେ वृत्ताकार भाବରେ ଯିବ. Yes, jete tume close ku jibo towards the conductor, it will be taking a turn, circular turn hobo, ekdam pakhu ku asile pura circle tume kari paribo. You can draw, you can have a circle, a loop, or you can make a coil also. Bhal lagibo. फुटा ताकू गोटे कागज भितरे एपट सेपट फुटेकरी गोटे कॉइल को रख, and you can draw by using a compass needle and the vicinity of that coil which is going down and going up, sei pakha pakhi rakha table upare, तुम देखिबो it will be circular, एपटे भी circular. किंतु दूरकू चली आस bend हबो, किंतु exactly middle राव bend हबनी, it will be completely straight. Bend habani. Infinite distance bend hab, it will be completely straight. Because there we use the thumb as the direction of the magnetic field. And we use the other fingers as the direction of the current. But in the vicinity of the conductor, we treat it as a small straight carrying conductor and use the opposite thing that we did for a straight carrying conductor and find circular lines of induction. Okay, with this much of acha, by the way, how ke kahibo kemti janibo gote solenoid ro north pole ko pote, south pole ko pote, kemi janibo? Mr. Padi, Mr. Om Prakash Padi. Sir, को मेथड टा अप्लाई करियो को चाहिबो? कोटा तुमको भल लागुची? right hand rule. ओके, ताले कोन करिवो? तुमे धरिबो ना गोटे एंड रो देखिबो? Sir, धरी देबी. धरिबो. को Sir, मझिरु माने मोर जो other fingers गुडा current direction को show करतबो, जदी anti clockwise जाउतिबो ताले सेटा north pole हबा और जदी सेपटु देखिबी सेटा south pole हबा, माने opposite. गड़बड़ कर दलो. तुमे धर
धरिल तुमर अदर फिंगर्स गुड़ाक करेन्ट रो डायरेक्शन को देखैला जोटा सोलेनॉइड रे जाउची करेंट आज्ञा तेबे को डायरेक्शन टा हबो नॉर्थ पोल सर एंटी क्लॉकवाइज टा नॉर्थ पोल तुम्हें मिसई दो दीटा को सूत्र को मिसई देले हबनी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जिते कहूच तुम्हें मीन कर गोटे एंड को जाऊच एपट पूरा एपट मुह को बा सेपटे टर्मिनाल को जाकि एमती देखुच मझिरे तुम अच्छ धरीच तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज कहीं कौच मोटे कहनी तुम्हें तो ऑलरेडी कही सारे मोर फिंगर्स गुड़ाक इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट कारण सी बहुत चालाक माने बहुत बुद्धिया पिला तो सी आ सब मिसई दउची सी कहूची एंटी क्लॉकवाइज जाउची माने नॉर्थ पोल हबो से दीटा को मिक्स करी कहनी मते मु एतेटा तम भलिया इंटेलिजेंट नुह प्रज्ञा कहलो सर मु कहतंती कि गोटे एंड रो देखिले जदि सेटा क्लॉकवाइज जाथो साउथ पोल भलिया लागबो आ एंटी क्लॉकवाइज जाथले भारी नॉर्थ पोल चालाक मान्य प्रज्ञा भारी चालाक से गोटे वे रे ताकू भल लागिची से पळे आस एंड रू देखिला जो एंड रू देखुची करेंट टा जाउची एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे जाउची करेंट टा तबे सेटा को से नॉर्थ पोल घोषणा करिवो ता आरो पटटा देखिवो से डेफिनेटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे आसुची सेटा को साउथ पोल घोषणा करिवो मते किंतु भल लागे रुद्र तुमको कोडा भल लागे सर राइट हैंड रूल हाँ जदि तुम धरिबो जो जो जाके जाइथिला पढ़िबा मते को जदि तुम फिंगर्स गुड़ाक देखैबो डायरेक्शन ऑफ द करंट ताहले सर हम थंब टा डायरेक्शन देखेबो तुम नॉर्थ पोल थंब टा जो डायरेक्शन जाउची सेही एंड टा थंब जो डायरेक्शन देखौची सेही एंड ऑफ द सोलेनॉइड टा को पोल हबो सर नॉर्थ पोल हो ऑपोजिट एंड टा साउथ पोल हो यस देखो पढ़ियो माने मु कहूची पाड़ी सार नुहे मु कहूची ये ओम प्रकाश जो डायरेक्शन रे थंब देखौची सेही एंड टा सोलेनॉइड रो सेही पार्श्व ए एंड टा हबो नॉर्थ पोल तार विपरीत एंड टा हबो साउथ ओके बढ़िया रिवीजन हमर हे गला मु बहुत खुशी वर्तमान आमे देखिबा जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के रहिला सेटा देखिबा ए देखो केते फील्ड प्रोड्यूस करूची टर्मिनल रे एटा टिके बेंड ही जाए फील्ड लाइन्स गुडा को बेंड ही जाए फल रे दिस इज वीक नियर द टर्मिनल्स तार डेंसिटी घनत्व कम किंतु भितरे they are strong and uniform if the solenoid is long enough then inner side ray the B magnetic field does not depend on its distance from the mid position, does not depend on the area of cross section, it depends only on the length of the solenoid. A2 is where winding hichi in a form of a solenoid length over depend kare, doesn't depend on the area of cross section or the distance from the midpoint, but in the vicinity the long hithibo ताले vicinity रे एते डिफरेंस आसीबनी शॉर्ट हेतिले जोटा टर्मिनल रे लाइंस ऑफ इंडक्शन रो घनत्व कम तेणु सेठी वीक फील्ड थाए सेठी मेजरमेंट करा जाय नै से हम लिखिची इठी लिखिची near the two terminals inside the solenoid the lines bend near the terminals bhitar pate kintu terminal pakapakhi re the lines bend and the field is slightly weaker. The strength of the uniform magnetic field jota bhitare inside the solenoid is found from the following relation. The field is proportional to the number of turns kette ghera ketteta n hoch number of gheros and L is the length of the solenoid and I is the current passing through and the proportionality constant is once again mu, the same permeability that you came across before. That is a measure of the resistance that the medium provides with for the formation of the field. So more is the
mu less is the resistance, more is the formation of field, and B is more. By chance jodi koi deithibi more is the mu, more is the resistance, no, more is the mu, more is the field. That means less is the resistance that the medium provides to create the magnetic field. So it back karo. So eita for gote bahut popular equation to find the B inside a uniform magnetic field inside a solenoid, which is N by L into I, and the proportionality constant is mu. Mu is in the medium. If mu, if it is inside is nothing, that is air core, then mu is called mu naught, tar value alga. How jodi ta soft iron ki hard core achi ki soft core achi, tar mu alga. Tenu mu naught sangre gote relative permeability factor 1.2, 1.5, 10 guna jaye. That is called relative permeability. Jemti relative density thae, specific gravity jahaku kahanti, apekkika sandrata. Same thing gote relative permeability achi taku guni dele seta 1.5 ki 2, thora soft iron core re 3, hard iron core re 50 guna field badhei dabo jodi hard core thibo, hard core thibo, soft core thile 2 guna badheibo. Jahale bi sabutu kam hochi kono na air, but nothing inside. And mu changes with the change of medium. Mu naught is written for air or vacuum. It's called air core. And I have told you for long solenoids, the B is independent of the distance from the midpoint, from the axis, nor it is dependent on the cross-sectional area. It is only dependent on the number of turns and the length of the solenoid. And of course, I. Eta me padiche, eta padiche, ei jinsa outre lekha hala, eiti onyo medium pai, gote relative permeability factor, gote guna hala. Eta fixed air pai. Ta tharu kette guna adhika onyo medium pai, relative permeability guna hala. E dita gunile, mu naught and mu r gunile mu of that medium, permeability of that medium. So, देखो एटा गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें करिचे यूजिंग नथिंग इनसाइड गोटे देइथिले बाहर करी आनचे एआर कोर अछि सेथरे म्यू नॉट यूज हेछि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई ए फार्मूला यूज हेछि एलटा गोटे 1 मीटर नेछि मनकर सो दैट बाय एलटा सेटा से लेखिनी सपोजिंग से 1 मीटर लेंथ नेछि यार से लिखनी अदरवाइज एल लिखा कथा किंतु एठी म्यू नॉट संगे गोटे के जहाँ को हमें म्यू आर कहते एठी जोठी मु कॉपी पेस्ट करिछि से रिलेटिव परमेबिलिटी को के नहीं हमें म्यू आर नहीं थिले डजंट मैटर के नबटा बेटर म्यू टर्म टा रहबा कथा नुई सेटा गुणा हे गले जेते रिलेटिव परमेबिलिटी जेते अधिका सेते बी सेते अधिका हबो एंड बेले बेले गोटे हार्ड कोर जदि नबो एते अधिका हे जिवो जे सेटा को परमानेंट मैग्नेट भी कर देई हबो ए मेथड रे इलेक्ट्रोमैग्नेट गुडा को टेम्पररी किंतु तमे जदि यूज करिवो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक steel, annealed steel with a lower carbon content, the core loses its magnetism once the electron stops flowing. Temporary magnet, electromagnet habo. Kintu jodi hard core use karibo, using chromium steel, tungsten steel, alnico and many other alloys use karibo, that can be converted to permanent magnet because these materials are very high relative permeability or hence the permeability will be very very high. High he gale ete jore magnetized he jibo the domains udaka thore aligned hela pore au se tar purbo jaga ku feriboni once the current is stopped say permanent magnet he jibo. Note that when the direction of the current changes the poles of eight ame janichu joda north pole south pole hitela ए डायरेक्शन में करंट थिला बेलकू ए डायरेक्शन में कला बेलकू एटा नॉर्थ पोल साउथ पोल हो एटा गोटे कोन अधिका कथा कहला देखो आमे गोटे कंटारे गोटे निजे सोलेनॉइड तयारी करछे एमती वाइंड करछे ठीक छड़ा छड़ा गैप रे सो सोलेनॉइड एटा हे गला एटा गोटे कोन हे गला ना कोरटा आउ एयर कोर रहिलानी आयरन कोर रहिला तो निश्चय अधिका स्ट्रेंथ अधिका हबो एयर कोर अपेक्षा
आयरन कोर टिके अधिका हम तार रिलेटिव परमिएबिलिटी एक रु अधिका एटा सो द मोमेंट इलेक्ट्रिक बंद हो जिवो जदी ताले आउ इथरे कोनसी एठी देखो एटे जब चालीथिबो इलेक्ट्रिसिटी गोटे छोटिया आयरन गुंडो को आनिबो से अट्रैक्ट करिवो इट विल एक्ट एज ए बार मैग्नेट द मोमेंट यू स्टॉप इट बोला देखो गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट एठी गोटे कॉइल गुरेकरी से पास करछि गोटे 9 वोल्ट बैटरी ना केते वोल्ट बैटरी यूज करछि से संगे संग केते उडा को पेपर क्लिप को टाण लाडी द मोमेंट एटा को जे बंद कर दबो गळी पड़िबो खतखात है कि गळी पड़िबो ऑलरेडी कहि सरछि ए जो क्रॉस चिन्ह देछि क्रॉस माने जेसस जो करो हमें क्रिश्चियन माने जो हम करू सही क्रॉस चिन्ह जदि दबो ताले इनटू गोइंग इनटू द पेज आउ जदि डॉट चिन्ह दबो गोइंग आउट ऑफ द पेज हम करछि सो दिस फिनिशेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 आज सारिबार अछि सीटा हला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वर्तमान आमे देखिबा जदि गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर रे करंट पास करूची एंड इट इज बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट सही समय गोटे आउ गोटे परमानेंट मैग्नेट चुंबक गोटे ताकू ता पाखरे रखिबा तबे ये गोटे फोर्स पाइबो डिफ्लेक्टेड हबो जेमति डिफ्लेक्टेड होतला मु कहउतली कंपास नीडल रो डिफ्लेक्शन रो कॉज आमे जानिबा वर्तमान सही समय आसी गला कंपास नीडल गोटे मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट करंट जो पास करछ सेटा मध्ये गोटे मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि करिवो एज ए रिजल्ट दीटा फील्ड भीतर इंटरैक्शन हबो एवं फल रे डिफ्लेक्शन हबो को डायरेक्शन रे हबो ता मध्ये तमे जानि परिबा आ टिके परे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहूची जे को डायरेक्शन रे तुमे देखिबो से जो करंट कैरिंग कंडक्टर ता ऊपरे बळ पड़िबो से डिफ्लेक्टेड हबो सो ये तीनटा ए जो बळ पड़िबो जो डायरेक्शन रे से डायरेक्शन टा इज परपेंडिकुलर टू द अदर टू डायरेक्शंस गोटे डायरेक्शन हला करंट जो डायरेक्शन रे करंट फ्लो करूची आ गोटे डायरेक्शन हला बी फील्ड रो बी डायरेक्शन परमानेंट मैग्नेट रो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सबुले नॉर्थ थ्रू साउथ को सेटा हला द कन्वेंशन फॉर फील्ड डायरेक्शन इन ए मैग्नेट पर्टिकुलरली हम हर्सु मैग्नेट बा यू शेप्ड मैग्नेट नो एटा को स्टडी करिया पे तबे तुम लेफ्ट हैंड को आनो समस्त तुमर लेफ्ट हैंड को मो संगे अलाइन माने देखो मते जदी मिडल खातार लेख मिडल रो बनान कौन मिडल फिंगर रो मु आईटा नेली मिडल फिंगर विल ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ करंट मिडल आईटा नेली मोरा कैपिटल कली आउ फोर फिंगर नियो फोर फिंगर एफ टा नियो कौन ना फील्ड दिस स्टैंड्स फॉर करंट फोर फिंगर जो बीसी अंगूठी फोर सेटा हला फील्ड डोंट कंफ्यूज विथ फोर्स बी जेमति मु कहे there are so many ways several teachers have their own way of explaining left hand rule तो मु एटा को निये मिडल एम आई टा को कैपिटल करे फोर फिंगर बीसी अंगूठी एफ टा को कैपिटल करे दैट इंडिकेट्स फील्ड बी एंड थंब टी एच यू एम बी एम टा को कैपिटल करे मोशन ता माने एटा फोर्स एफ टा को मु फील्ड निये मोशन टा को मु एम लिखे थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ the motion or the force that is exerted on the conductor, current carrying conductor, and this is perpendicular to both a paraspara tinta jaka they are perpendicular to each other. Eita hala field vector bc anguti, eita hala current vector mane jo
the length vector, the length, and it is showing the direction of the current is the direction of the length vector. And they are perpendicular to each other. So they are perpendicular, but they are in one plane. They may remain at an angle 60 degree. How phi is determined as a dot product of what? B and A. the area vector. एठी देखिबा कोन होची एठी क्रॉस प्रोडक्ट आसियो सेति में how important it is to understand the details about the dot and cross product that we'll be doing in super advanced scan. So and ei jo thumb motion buda anguti, that will be perpendicular to the plane carrying the length vector, that means current जोठी जाउची से vector आउ एटा होची field vector से जो plane को perpendicular रहिबो the direction at which the force is exerted on the conductor, it will deflect at that direction. Now let us apply here. वर्तमान एटा मार्क करो नॉर्थ रु साउथ को समस्तंकर वर्तमान बीसी आंगुठी को नॉर्थ को साउथ एमती करो आग सबुडा को बंद कर दियो बीसी आंगुठी होची फील्ड एमती करो नॉर्थ रु साउथ कलो बीसी आंगुठी देन ये करो बुढ़ा आंगुठी खोलो एवं वर्तमान करंट रे डायरेक्शन से देई देई छी इयाडू को जाउची एटा प्लस एटा माइनस सो करंट डायरेक्शन एटा एमती. So BC anguti वर्तमान देखो एमती मो आडू को रहिला showing the direction of the current that in this conductor it is coming from below the plane and towards out of the plane. एमती तम आडू को वर्तमान बुढ़ा आंगुठी देखाओ वर्तमान टिके स्ट्रेच कर दियो so that बुढ़ा आंगुठी will be perpendicular to the plane of BC and बुढ़ा. And you will find a बुढ़ा को BC and middle ओडिया रे कौन थी ओडिया रे मिडिल फिंगर को कौन मझी आंगुठी एटा तो बीसी एटा तो बुढ़ा हां और कौन थी तर्जमा तर्जनी हाँ छाड़ मु कहूची मझी आंगुठी मिडिल फिंगर. सो मिडिल फिंगर तम आड़ को बीसी आंगुठी ऊपर को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रे सो दैट थंब देखौची बां दिगरे towards left so that mu it lekhichi this is actually more lekhiba katha motion ethi motion jagare mu force lekhichi don't mind ebong force jagare mu b lekhichi b field lekhichi eta jota dekhouchi eta bc anguthi eta north through south ko seta b lekhichi lekhiba katha f stands for field kintu eti m no lekhikiri मु एफ लेके जे फोर्स पड़िबो आ ऊपर फोर्स पड़िबो सो एटा डिफ्लेक्टेड फटकिन एपट को हिजो द मोमेंट यू टर्न ऑन द स्विच एटी स्विच लगे तो टर्न ऑन करिवो फटकिन डिफ्लेक्शन एपट को हिजो आउ जदी करंट रे डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज कर दो बैटरी ताले कोन होबो संगे संग तमे बुढ़ा अंगूठी जोटू देखौथला एमिति देखेबो ओ बीसी अंगूठी सेमति रहे बुढ़ा अंगूठी कहछो मिडिल फिंगर तो ओडिया मु जानू नहीं हो तर्जमा ना कौन से कहतला तर्जनी अच्छा मिडिल फिंगर टा जदी तमे देखैबो याड को away from you that the current is going in on the opposite direction and बीसी अंगूठी फोर फिंगर्स एम्प्टी अछि ऊपर को then the thumb will represent towards the right so that it will be deflected to the right. So this is the Fleming's left hand rule. मते कहले देखिबा एटा गोटे प्रॉब्लम देछि तुमको एटा गोटे रेल अछि रेल धारणा भलिया ता ऊपर गोटे लाइट आयरन और गोटे रॉड टे अछि एठी बैटरी संगे लागिछि एटा प्लस एटा माइनस एवं गोटे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग फ्रॉम डाउन टू अप ता डायरेक्शन देछि बी रो डायरेक्शन ता से दे देछि it is from below to upwards तबे इटा हठात करी करंट पास करि देले डेफिनेटली इट क्लोज सर्किट एठी हे जीवो एमती एटा तो ओपन अछि एठी क्लोज सर्किट हे जीवो एपटे तो करंट जीवो सेतेले एटा रेल रे को पटे जीवो लेफ्ट रे जीवो ना राइट रे रेल रे मूव करिवो. Apply the Fleming left hand rule and tell me what will happen to the sliding iron वायर सेटा गोटे वायर टे धर
sliding where will it go to the right or left? Gote hato achi. It's very, very pathetic that others are unable to decide by now. Apply. Tomar left hand ko kholiba padibo, not right hand. Left hand BC anguthi tomar four finger taku emti rakho upurku, emti upurku, because that is the direction of the field B. And current direction ta kon rakhibo na jehetu positive ru negative ta mane correction emti heki emti jauchi. Automatically empty ହେଇକି empty ଯାଉଛି. So definitely empty ରଖିବ. ଏଇଟା up ଦେଇଛି ସେ up, ଏଇଟା positive ରୁ negative current ଯାଏ, ଏଇଟା ତୁମ away from you, not towards you, away from you, that is the middle finger. So thumb represent କରୁଛି କୋଉ ପଟେ, କିଏ କହିପାରିବ? ଓମ ପ୍ରକାଶ କହିଲ. Sir, ଡାହାଣ. Yes, ଡାହାଣ is the correct answer. ଏଇଟା rail ରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବ. जदि करंट रो पोलैरिटी चेंज कर दबो, एटा प्लस एटा माइनस करिवो, करंट रो डायरेक्शन एमती हबो, तो संगे संग एमिति करिवो, मिडिल फिंगर टाकू तमे तम नाक आड़ को दबो, बीसी अंगुठी फोर फिंगर ऊपर को अछि, सो दैट थंब विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द लेफ्ट, सो सेटा बां पट को जीवो, एबे वर्तमान डाहाण पट को जीवो. बुझिलो प्रीतम? बुझिलो प्रज्ञा? प्रज्ञा आज्ञा सर. कहीं कोई पारलनी? हाँ एक्जाक्टली सही भलिया. जदि तुम गोटे चार्ज थाए, स्टैटिक चार्ज, सेटा बर्तन डायनामिक हबो. गोटे चार्ज क्यू, एंड दैट टू ऑलवेज प्लस चार्ज. नेगेटिव चार्ज जदि मूव करिवो ताहले तमे तार ऑपोजिट डायरेक्शन नबो टू अप्लाई फ्लेमिंग रूल, बिकॉज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तेणु एक्चुअली जदि गोटे पॉजिटिव चार्ज क्यू अछि, सेटा मूव करूची इन ए मैग्नेटिक फील्ड, प्लस प्लस माने मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन इनटू तम नाक पाखरो फुटी जाईची, तम से स्क्रीन जोठी देखुचो ता भितरे फुटिकी बाहर को बाहर छी, सेटा हला फील्ड. केतेबेले फील्ड ता एफ दउची, केतेबेले फोर्स ता एफ दउची. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बाय द सिंबल एफ. एटा बी फील्ड देखुची, एटा ए फोर्स, एटा एफ टा को फोर्स को से मीन करूची. So जदि गोटे चार्ज मूव करे, it is analogous to a current. Current is a flow of charge. एका जिंस एठी गोटे कंडक्टर भितरे मूव करनी, खाली गोटे चार्ज टे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे अछि बा गोटे स्फीयर रे अछि कि कोथरे अछि, से मूव करूची, एटा मूव करूची. त माने it is generating current. Flow of charge माने current, and that will produce a magnetic field, and the two fields will interact, and there will be a force exerted on the moving charge. Exactly eka niyam eka. बां हाथ जदि फील्ड रो डायरेक्शन टा अछि ऊपर को, सॉरी इनटू, तेणु तुमे तमरो फोर फिंगर बा बीसी अंगुठी कोन करो ना एमती करो, एमती मु तम आखि भीतर पुरै हाथ. सो इनटू, एंड the etikon velocity, the direction of the velocity of the charge will be taken as the direction of the current. So vartan middle finger taku emiti neli, emiti towards the right. The velocity of the moving charge is similar to the direction of current, and then the thumb will represent to which direction it will be, it will be moving, or force will be exerted on the moving charge. The moving charge will be moving up, will be deflected up, will be getting a force upwards. Thumb doji. Out a interesting rule, taku kahati right hand thappad rule. Seita besi popular kahinki na ame jetebele induced EMF padiba, right hand rule sabubale use hue. Tenu bahut teacher universally Fleming को गोली मार दे. फ्लेमिंग रो दीटा को रूल फ्लेमिंग करो, तेणु पूरा फ्लेमिंग को गोली मार ना. राइट हैंड को से लेफ्ट हैंड टा खराब हैंड टा, राइट हैंड रे आमे एटा को विद्युत प्रणोदित बल को देखिबा, एपटे जो फोर्स पडुची गोटे मूविंग चार्ज ऊपर किंबा गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर, ताकू मध्य आमे राइट हैंड द्वारा प्रकाश करबा. रूल कोन ना, जदी तमरो बुढ़ा तमे सीधा तुम्हारा राइट हैंड बर्तमान नियो, पूरा ओपन कर दियो हैंड तक स्ट्रेट,
कर दियो एवं बुढ़ा आंगुठी रे देखैबो in the direction of कौन direction of field. The thumb will represent the direction of current. No, sorry. First, stretch all the fingers of your right hand to remain in one plane. If the thumb will represent the direction of current, I'm so sorry. The middle finger ta seti thila left hand rule re. The thumb will represent the direction of the current, and or the velocity of a moving charge. If all other fingers represent the direction of the magnetic field, then the direction in which you will move your hand perpendicular to slap or give a thapper to a person in front of you. Thara tama agare gote loko achi, current direction emti jauchi gote conductor re, baki अन्य anguli gudaka is giving the direction of the field, अन्य सब gudaka anguli is in the direction of the field, अन्य सब gudaka anguli buda anguti, now they are perpendicular to each other. Buda anguti is now giving the direction of the current, not the motion that we have done in left hand rule. So the thumb is giving the direction of the current, all other fingers is giving the direction of the field. Then tame kon karibo, tama agare gote loko thia heichi, taku gote thapad mariyaku chahibo, jo direction re hato jibo sei direction re motion padibo ba ta upare force padibo. जदि ए डायरेक्शन मारियो धर एमटी जाउची, करंट डायरेक्शन एमटी अछि, तो तम पापुली आगरे से लोक ठिया हबा को बाध्य, पापुली आगरे से लोक ठिया हबा को बाध्य, न ठिया हेले ताको कहि दबो ठिया हो तो थापड़ देबी ए सतरे मारिबोनी का. सो तम पापुली आगरे गोटे लोक अछि भाबी कि तो पापुली सीधारे जदि हाथ मूव करिवो तेबे पुश करिवो, एक्चुअली थापड़टा को आमे करिछु ए टीचर्स माने, कि एक्चुअली पुशिंग रूल, hand pushing rule, push karibo jodi tumar towards in the direction of where the palm jo the papuli achi sei direction re push karibo, jo direction re push karibo seita habo the direction of the sei katha ta tame apply karo eithre. Bartan tame left hand rule padino, tame padicho bartan right hand thapod rule, tame kon karo stretch karo sidha hath samaste stretch karo korjo na nai. तो बर्तमान डायरेक्शन ऑफ द करंट कौन ना याडे टुवर्ड्स योर नोज. बर्तमान बुढ़ा आंगुठी को तुम टुवर्ड्स योर नोज देख, पॉजिटिव रु नेगेटिव आसुची, एवं तुम अन्य फिंगर्स गुड़ाक ऊपर को रख, न एमती रख था फिंगर्स जदि तल को नॉर्थ ऊपर था साउथ तले था एमती रख था, किंतु बर्तमान एमती रख, ए फिंगर्स गुड़ाक विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फिंगर डायरेक्शन ता. तो बर्तमान तो आगे कहीं ना मारो गोटे एमती, तब डेफिनेटली लेफ्ट को जाउची. आउ जदि एमती ही था, डायरेक्शन ऑफ द करंट जदि चेंज करिवो एमती हो ताले एमती मारिवो, सो इट विल बी टू द राइट, नाउ इट विल बी टू द लेफ्ट. कोटा भल लागुची, राइट हैंड थप्पड़ रूल ना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? से जिनस एठी अप्लाई करि परिबो, एठी अप्लाई करो तुम ये को बुढ़ा अंगूठी को तमे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेख एमती. बुढ़ा अंगूठी बर्तन करंट डायरेक्शन हे गला, अदर फिंगर्स हे गला ऊपर को जानी कि देखैछि काइना अपवर्ड्स अछि करंट डायरेक्शन. तापर तुम पापुली सामना रे गोटे पुश करो, जो डायरेक्शन रे जाउची से डायरेक्शन रे ता ऊपर बळ पडिबो टू द राइट. तो एटा अधिकांश इवन अमेरिकन बुक रे मध्य समाने पिला को पढ़ांती यूजिंग ओनली राइट हैंड फॉर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, which is actually the Fleming जे असल लोक से लेफ्ट हैंड रूल यूज करथिले, किंतु एमाने ताको राइट हैंड कर देले. बट करंट रो डायरेक्शन टा बुढ़ा अंगूठी द्वारा प्रकाश पाइला एवं अन्य फिंगर्स गुड़ाक प्रकाश पाइला फील्ड रो डायरेक्शन, एवं आगो को पुश करवा डायरेक्शन टा हला द फोर्स with force that is exerted on that current carrying conductor or a moving charge. If it is a moving charge, then Buddha Anguti will give you the velocity direction, the direction of the velocity in which
the charge is moving. So, Vartaman, tar quantitative aspect jiba purbaru will be going to the quantitative aspect. Bill Clinton ku jiba ame cross product देखिबा जे how dita field interaction करूचंती फଳରେ गोटे पटटा घनत्व बढ़ी जाउची गोटे पट रेयर हे जाउची घनत्व कमी जाउची एंड सब बेले कंडक्टर टा हायर फील्ड इंटेंसिटी रो लोअर फील्ड इंटेंसिटी को मूव करे से जिंसटा जानिबा जो जिंसटा आमे भाबुथिले मने मने काहे कि कंपास नीडल टा डिफ्लेक्टेड होउची सेटा गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू रे बुझी देले सेटा इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग एंड आल्सो देखिबा केमिति फोर्स तर मैग्नीट्यूड ता होची BIL sin थीटा इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ the IL vector, L length vector. So I guni dele I ta gote constant. I is not a vector quantity current. So L is a vector quantity length vector. The direction is the direction. The current direction ta hochi vector, the length vector direction, or the velocity or direction of the moving charge is the direction of the eta V as jibo. I would equation mu kahibi. Kintu for current carrying conductor it is IL cross B. Cross product re sin theta ase. Dot product re cos theta ase. So the magnitude is Bill sin theta. Ebong direction ta ame cross product ta padine to tar direction of the product cross product ra answer mane product ta nije vector quantity kintu dot product ra product ta is a scalar quantity. A and B two are vectors. And if they are multiplied by dot manner, scalar manner, then the product is a scalar quantity. If it is multiplied in a cross manner or in a vectorially, then the product is a vector product. Tar direction achi. The same method re madhya dekhiba. Tinita method re tamuku mu kahibi. In the form of the cross product rule, in the product of right hand thapod rule, and original Fleming's left hand rule. So सेटा में काली देखिबा मु टिके आजी मोर टिके urgent meeting अछि to join in Ravensa University for a convocation meeting, so I have to leave you little early. So boys and girls and other viewers who are watching from the live streaming of YouTube, please bear with me, excuse me for the inordinate early premature closure of the class. And those who are now with me in the Zoom session, pile up your doubts, write down your doubts and send me. It will be my pleasure to interact with all your doubts. Bye bye. Sir, pranam.